I hope you can see the screen. Yes, sir. Okay. Now हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट हैं एंड अब हमने चूँकि लिसनिंग और रीडिंग करनी है तो उसके लिए वी गोइंग टू बी यूजिंग दिस वेबसाइट और डेली हमने इसको यूज़ करना है. ठीक है. राइटिंग एज यू नो हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है. हिना, हाउ वाज योर स्पीकिंग टुडे, वाजंट इट? Sir, it will be tomorrow at 4 p.m. Oh, it's tomorrow at 4. All right, all right. Okay. So how have you prepared? I tried my best, but I'm not sure. चले, hopefully everything will go fine. Inshallah. So यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं we have 6 practice tests और वो 4 modules में divided है. We have a listening module here, reading module here, writing and speaking. यहाँ पर आप writing और speaking अगर आप online करेंगे तो उसकी evaluation नहीं होती, ठीक है, बट आप अपनी listening और reading जो है उसको कर सकते हैं और उसके पीछे उसकी आंसर कॉपी भी होती है तो you can even practice on your own. तो आप लोग जो है उसको आसानी से जो है you can go about it and practice as much as you can. मेरे ख्याल में इस वेबसाइट पे like 100 प्लस टेस्ट जो है वो पड़े होंगे फॉर प्रैक्टिस. ठीक है. सो जैसे हमने वॉल्यूम 1 अभी ओपन किया था, वॉल्यूम 1 हैज 6 टेस्ट. तो उसमें से हम लिसनिंग भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, फिर टेस्ट 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग टुडे और कल से फिर हम रीडिंग की तरफ जाएंगे, रीडिंग लिसनिंग के लिए. अब आगे हमने जो है ना सारा टाइम जो है वो देना है. ठीक है. सो द फर्स्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दिस फर्स्ट लिंक दिस इज टेक टेस्ट. ओके. इस वेबसाइट की 2-3 फीचर्स मैं आपको बता दूं. इफ यू look here, if you come to these ellipses, you can see that there is a view solution here as well, which will tell you the solution. ठीक है. अगर आप सीधा आंसर की देखना चाह रहे हैं तो you should click this, otherwise you should click take tests. And once you click take tests, तो this will come open. ठीक है. यहाँ पे जो है अनुषा, आपको आ रहे है, स्क्रीन नजर आ रही है? आई थिंक यू गॉट डिस्कनेक्टेड Yes, समवेयर. sir. ओके. Yes. ओके. सो लिसनिंग, दिस इज द लिसनिंग टेस्ट. इससे पहले हम लिसनिंग स्टार्ट करें, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है. लिसनिंग जो होती है दैट इज बेसिकली 40 क्वेश्चंस. ठीक है. और जो 40 क्वेश्चंस होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. लिसनिंग टोटल 30 मिनट्स की होती है और आपने 40 क्वेश्चंस इन्हीं 30 मिनट्स में जो होते हैं उनको आपने कंप्लीट करना होता है, सॉल्व करना होता है. चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दें या पेपर बेस्ड एग्जाम दें, आपको रफ शीट और पेंसिल मिलता है जिससे के लिए आप ड्यूरिंग योर लिसनिंग यू कैन मेक नोट्स. जो 4 सेक्शंस में लिसनिंग होती है दैट इज वेरी स्पेसिफिकली डिवाइडेड टॉप थीमेटिकली. जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं लिसनिंग के, एज यू कैन से हियर सेक्शन 1 क्वेश्चंस 1 to 10. तो ये जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं दिस इज ऑलवेज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल अबाउट एन एवरीडे लाइफ टॉपिक. ठीक है. जैसे यहाँ पर है मूविंग कंपनी सर्विस रिपोर्ट. ठीक है. देयर बी अनदर वन लाइक कोई जॉब के लिए कोई कर रहा है या यू समबडी इज फोनिंग इन टू अ सेक्रेटरी. ठीक है. टू मेक एन अपॉइंटमेंट with a bank manager or their doctor. ठीक है. You will see like this. और उसके बाद जो क्वेश्चन पार्ट 2 होगा, ठीक है, सेक्शन 2 जो होगा, दिस विल बी अ मोनोलॉग, अ स्पीच और अ लेक्चर. ठीक है. अबाउट एन एवरीडे टॉपिक. ठीक है. जैसे यहाँ पर है दिस इज अबाउट एन एनुअल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. एंड यू विल गेट, ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज. और आपने जो ऑडियो से सुन के मिसिंग जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर फिल इन करनी है. ठीक है. जो थर्ड सेक्शन होता है 21 to 30, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज अ ग्रुप कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2, 3 or 4 people. It can be anywhere between these. Guys, just excuse me a second.
यस। सो जो क्वेश्चन जो सेक्शन 3 होता है, दीज 10 क्वेश्चंस विल बी इन एन ऑडियो जो कि ग्रुप कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2, 3 and 4 people. ठीक है, इट कैन बी 2, 3 or 4 people. So all of these, and this will be on an academic topic. It can be they either be discussing something of a historical figure, a lecture that they all listen to, or excuse me, Roma, ये डोर प्लीज बंद कर दो. So they'll probably be discussing campus life or an academic topic, ठीक है. And जो discussion होगी उसके अंदर से mostly section 3 में you will get MCQs, multiple choice questions बेशुमार होते हैं section 3 के अंदर. And then finally we'll have section 4. Section 4 जो होता है, that is just like section 2. This is a monologue, a speech or a lecture. एंड इसके अंदर किसी एकेडमिक टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया जाता है. ठीक है. सो जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग के, वो एवरीडे लाइफ से होते हैं, और जो लास्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द 40, दे आर ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी लाइफ. सो दिस इज हाउ द लिसनिंग एग्जाम इज स्ट्रक्चर्ड. और जो लिसनिंग होती है, दिस इज ओनली प्लेड वंस. ठीक है, ऑडियो सिर्फ एक दफ़ा चलती है. इस वेबसाइट पे तो यू कैन कंट्रोल द ऑडियो, आप उसे पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं. बट इन द रियल एग्जाम यू विल नॉट हैव दिस कंट्रोल. सो आपने, देर इज कंसिडरेबल पॉजेज एंड ब्रेक्स बिटवीन द सेक्शंस. सो वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, सारे सेक्शंस इकट्ठे एकदम नहीं चलते. देर इज अ गैप ऑफ बिटवीन अ मिनट एंड अ हाफ बिटवीन ईच सेक्शन. ठीक है, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, बट जस्ट फॉर लेटिंग यू नो, यू कैनॉट पॉज द ऑडियो, skip it और rewind और forward it. तो आपने उसी के साथ चलना, और इसी तरह 30 मिनट्स में ये एग्जाम जो है वो खत्म होता है. इफ यू आर गिविंग पेपर बेस्ड एग्जाम, तो आपको लिसनिंग के एंड पे 10 मिनट्स का टाइम मिलता है कि आप अपने रफ आंसर्स जो हैं उनको नीट आंसर शीट के ऊपर उतार लें. हाउएवर इफ दैट इज नॉट द केस, तो फिर अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर यू विल गेट 2.5 minutes to recheck your exam and fill in any missing answers on the computer screen. ठीक है, आप दोनों एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं या पेपर बेस्ड हैं, दे आर ऑफ द सेम डिफिकल्टी, सेम लेवल. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता ना एग्जाम डिफिकल्टी में, ना मार्किंग में, ना स्कोरिंग में. एंड द पेपर इज एग्जैक्टली द सेम. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द मीडियम ऑफ हाउ यू गिव द एग्जाम. बस इसका एक फ़र्क है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है. um, so a few things to consider, ठीक है, before we head into this practice here. ठीक है, so listening में आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है when you're looking for answers. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर्स होते हैं पहले क्या कहते हैं 10 पहले सेक्शन के अंदर, वो बहुत आसान होते हैं. देर मोस्टली जस्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन जो आपने एग्जैक्टली सुन के उसको फिल इन करना है. हाउएवर लेटर डाउन द रोड द नैरेटर्स विल यूज सिनोनिम लैंग्वेज. ठीक है, और ऑफ कोर्स आपने फिर उसको सॉल्व करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर सिनोनिम लैंग्वेज में कहाँ पे बात की गई है. एंड दिस goes on the more you progress down in the exam. ठीक है, और जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है हर सेक्शन का, वो प्रोसीडिंगली हायर होता जाता है. सो पहला सेक्शन सबसे आसान है, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और फिर उससे मुश्किल. ठीक है, सो यहाँ पर यू कैन सी दैट वी हैव द क्वेश्चन हियर, कंप्लीट द फॉर्म बिलो. ठीक है, क्वेश्चंस 1 to 6 and says write no more than 2 words and or a number for each answer. So this restricts us to no more than 2 words and or a number. इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते. अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, या बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन जीरो हो जाएगा. एवरी करेक्ट आंसर इन द लिसनिंग एग्जाम कैरीज 1 score, एंड एवरी पार्शली करेक्ट रिस्पॉन्स कैरीज हाफ स्कोर. ठीक है, उसमें क्या होता है, सपोज अगर आंसर था अ फ्लावर और आपने सिर्फ लिख दिया फ्लावर, आ नहीं लगा, आर्टिकल मिसिंग है, तो यू विल गेट हाफ अ स्कोर. या आंसर था देयर, THERE, और आपने लिख दिया THIER, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सो यू विल स्टिल गेट हाफ अ स्कोर फॉर दैट. ठीक है, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे यू विल गेट नो स्कोर. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो दैट इज अ गुड थिंग. सो जब अभी हम ऑडियो सुनेंगे तो यू विल सी कि मोस्टली एक्सेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश हैं, या
समटाइम्स ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, मोस्टली ब्रिटिश ही होते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू हैव, आई डोंट थिंक कि इससे कोई ट्रबल होती है, बट लाइक यू नो इट्स गुड to still pay attention. Taking notes in the listening exam is very crucial, and you should always pay attention, and you should always take the time to look at, scout the questions, and look at what kind of information is missing, so you can look for that when the audio starts. ठीक है. Since the audio is going to be played once, you will not have the chance to answer. अगर कोई नोट बनाते हुए आपसे कुछ, if you've lost something, कुछ miss हो गया है, तो it is going to be very difficult for you to catch up. ठीक है. तो वो जो मिस हो जाता है वो परमानेंटली मिस हो जाता है. एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? No, sir. यस है ना? एनी क्वेश्चंस? It's, it's clear, sir. क्लियर है. ओके, दैट्स गुड. मैं यहाँ पर अभी सैम्पल ऑडियो स्टार्ट करूंगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आप मुझे बताइएगा कि इफ यू गाइस कैन हियर. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. जी, could you guys hear the audio? Yes, sir. Yes, sir. Okay, wonderful. So I would suggest take out your pencils and papers, ठीक है, ताकि आप साथ में नोट करते जाएं. If you find trouble, वैसे तो मैं साथ साथ scroll करता जाऊंगा ऑडियो में, ठीक है, as the questions go by. But if you think, you can One also second. open. Okay, sure. You can also open this link at your end, और आप वहां पे भी questions को scroll कर सकते हो. ऑडियो हम बेशक यहीं से चला लेंगे. जब आप लोग रेडी हो जाएं, प्लीज मुझे बता दीजिएगा. विल स्टार्ट. I'm ready, sir. ओके, मैं अनुष्य का वेट कर रहा हूँ. अनुष्य भी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं मेरा. Okay. Okay, sir. Okay, wonderful. So I'm going to start the audio, ठीक है. There will be time for you to read the instructions and questions,
and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk from a moving company and a woman who wants to relocate to the United States. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, ma'am, and welcome to Australia's Moving Experience. How can I help you? Well, I hope you can help me. I'm so up in the air right now. Just calm down now. Let me guess. You're moving and it has you a little confused. That's it exactly. You see, I'm relocating to the United States next month, and I'm having a hard time getting organised. Here, fill out your name and address and let me ask you a few questions. Oh, what should I call you? My name is Jane Bond. The woman says that her full name is Jane Bond, so Jane Bond has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning, ma'am, and welcome to Australia's Moving Experience. How can I help you? Well, I hope you can help me. I'm so up in the air right now. Just calm down now. Let me guess. You're moving and it has you a little confused. That's it exactly. You see, I'm relocating to the United States next month, and I'm having a hard time getting organised. Here, fill out your name and address and let me ask you a few questions. Oh, what should I call you? My name is Jane Bond. OK, Jane, first of all, what's your work phone number? In case I have any questions about things. My work phone is 9463 550. But please try not to call me too often there. My boss hates personal calls. So does mine, ma'am. So does mine. And what address should we ship your things to? My new company is letting me stay temporarily at 509 Clark House. That's CLARK. 1137 University Drive in Seattle. Seattle? Beautiful city, I hear. Mountains right beside the ocean almost. Cooler than Australia, too. OK, and when should we come pack your things? I guess that would be on Monday, March 11th. Do you want any help with an after-packing clean-up? We do that for a small additional charge. Yes, that would be helpful. I promised the landlord I'd give her the keys back by 5 p.m. on Thursday the 14th. Great. We'll just schedule the clean-up for that day. That way, the place will smell clean and there'll be no dust. Well, you do think of everything. Oh, how much is this going to cost? Here is a list of our basic prices. Oh dear, this seems rather expensive. Yes, ma'am, but you're paying for the best. We're careful and we're fast. Like we say, the only thing we break are speed records getting you moved. Well, maybe that's so. Oh, I nearly forgot to tell you. I don't want my furniture shipped with me. I won't be looking for an apartment till after I arrive in America. Would it be possible to put my furniture in storage here for a month, then have it sent along later? Of course, we do that all the time. A couple of other things. Here at A Moving Experience, we try to pack your things logically. We don't just throw stuff in boxes. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
Now listen and answer questions 7 to 10. Do you have any special requests? You know, things you want packed in some special place so you know where to find them. Like what? Oh, I don't know, things like dishes maybe. Not to be rude, but you look like a lady who likes to eat. Ah, yes, I need my dishes and things where I can find them quickly. Great. We'll put those dishes and cutlery in what we call the emergency pack. Can you think of anything else? I do have an antique tea kettle my great-grandmother gave my mother. I wouldn't want to lose that. So I guess you'd better put that in storage with the furniture. Grandma's tea kettle with the furniture. Got it. Say, how about things like your alarm clock? You don't want to miss your plane on the big day, right? Well, you certainly think of everything. Yes, that's right. I'll also need my alarm clock where I can find it. Fine, we'll put that in your personal package. And of course, we'll give you a list of where we pack everything. So all you'll have to do on Thursday the 14th is grab your luggage on your way out the door. I couldn't help noticing the new CD player you're carrying. Is that a Samsung? Why, yes it is. One of their best. Cost me nearly $100 it did. Do you want to take special care of it? I mean, it's brand new. Take care of it, but nothing special. You can just put it in storage with the furniture. That looks like everything we need here. I guess you're all set. That was certainly quick. Thank you, young man. This has been a most moving experience. Yes. How was that? Good, sir. Mm-hmm. It was Yes, good. sir. It's very interesting and rather thoda sa. It's interesting. Gee. Okay. Hina, how did you do? So it was good. I missed the single. I think I lost my concentration for some other things, so I missed the. घर में यही होता है पढ़ने का कभी इधर कंसंट्रेशन होती है मेरा भी बेबी है ना वो बाहर बांगे दे रहा होता है आके दरवाजे पे कि बाबा बाहर ले जाओ मैं कहा बेबी क्या कर रहे हो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ yeah This is cool. big thanks to COVID चले कोई नहीं okay let's quickly listen to section 2 as well और फिर कल बाकी दो sections करेंगे okay ठीक है, sir. Okay, before we start, okay, just a heads up. अभी ये जो first section था, that was rather very straightforward and easy. Okay, sometimes they try to make things a little more, flavorful. क्या होता है? एक तो मैंने बताया था कि you should look out for synonym language. ठीक है? आमतौर पे section 1 के अंदर synonym language इतना matter नहीं करती, but later sections में it starts to come in. आपको synonym words का जो होता है ना वो you have to look them out. उसके बाद जो दूसरी चीज होती है there is a habit of these speakers. What they do is that they self-correct or correct the other person. So for instance, you may hear somebody say, okay, I think that Dash film was really a nice, entertaining movie. Okay, and the second person will say, I think it's a horrible film. I think the acting is really bad, and the first person would say something along the lines of, yeah, I guess so. Okay, now question में आ जाता है कि like what have they like what is the perspective of the first person here. अच्छा अब जो later है वही so even though initially उसने कहा कि movie अच्छी थी, he later on agreed with the second person and said okay, yeah, he said that was a horrible film and yeah, I guess so. So then he corrected himself. Okay, so you have to look out for these corrections. Okay, sometimes they will do that and it's not always obvious. Sometimes वो ये कह देंगे my home phone is 618-593-810 and then it will say, oh, I forgot there's a 9 at the end, or it's not, there is no 0 at the end. So wo chota वापस you have to look out for. So it's not, I mean, they will not repeat the entire thing. They will simply say, okay, इसमें से ये कम कर दो. So you have to look out for these corrections. ठीक है, self correction की होती है. Plus sometimes there's just too many options जो आपके सामने रख दी जाती हैं. ठीक है, और मतलब if you're just looking up for keywords, तो keywords सिर्फ match नहीं करने. You have to match the context. You have to match
the meaning as well. ठीक है, so overall जो बात हो रही है, keep that in mind as well. So ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि listening में students को challenge करती हैं. So I wanted that कि आप लोगों को इसका idea हो, and then let's see how do you perform in this next section. I'm pretty sure it'll be great. Now, listen carefully and answer questions 11 to 16. As you can see that we are allowed, no more than 3 words and or a number for each answer. And you can see that the table here shows missing information. So we have a time column, we have a content column, we have a location column. And pehle mein we have 11 and 12 is missing content, then we have missing locations, then we have a missing time, and then again we have a missing location. So you have to find these. Okay, so best of luck. Let's go. Good morning, everyone, and welcome to the second annual Wallabaloo Conference on Mastering Computer Languages. I hope you all had a good trip. Before we get underway with today's program, let me fill you in as to what's on tap for tomorrow, Sunday, February 19th. At 9 a.m, right here in the main hall, we'll be hearing a lecture from Dr. John Smith about computer as teacher. Professor Smith from the University of Melbourne is a world-class expert in the field of computer-assisted education, and his talk promises to be both stimulating and informative. Immediately afterwards, at 10:30, there will be a presentation of papers by various delegates. That, however, will take place in the garden room on the ground floor. If you don't yet know, the garden room is also called the ballroom and will be gathering at the west end, the slightly raised area called level 2. Just look for the crowd. If you get lost, there are signs in the foyer. After all that thinking, talking and listening, I expect everyone will be a bit weary. So at 11:15, there will be a break for coffee, cookies and other light refreshments. These will be available at the aptly named refreshment stand, placed by the door back here in the main hall. Also, if you choose to skip the formal lunch, you can buy a packed lunch at the stand for a reasonable price. I strongly urge you, however, to join us at the formal lunch. That won't be till 1 o'clock sharp, so you have time to stroll about town a bit. We'll be eating at the Seaview restaurant. The restaurant is located right here in the hotel on the top floor. It's a good dozen flights of stairs, so I suggest you take the lift on the ground floor, eh? If you're not fond of fish, there's an all-you-can-eat barbecue available as well. They even offer wallaby meat. After lunch, we'll troop back downstairs to level 2 in the ballroom for the presentation of further papers, which will begin at 2 p.m. Please try to be on time. I know you'll be a bit tired after lunch, but the ballroom echoes so with people coming in late. Thank you in advance. Once we've heard the papers, we'll break for afternoon tea at 3:10 p.m. No need to walk. The manager of the refreshment stand has graciously agreed to have tea served in the ballroom. He's even promised us some special scones, baked from a recipe of his dear old Scottish grandmother. Then, tea being drunk and scones munched, we'll retire here to the main hall for some closing remarks and questions. So, by 5 o'clock, we should have the conference wrapped up. But the fun isn't over. This is Australia, mates. We'll be flocking to the hotel's own Palm Lounge on the east side of the foyer for an informal reception. You can relax, mingle with the other delegates, and let your hair down a bit. This will run from 5:10 to 6:10, though you're free to stay as long as you like. The lounge manager has informed me that for the duration of the actual reception, you can have all-you-can-drink beer for $20 with purchase of an advance ticket. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. And yes, tickets can be purchased from any conference organiser or at the front desk any time between now and the start of the reception.
I suggest you come by tomorrow evening to pick up the tickets, since the conference hall only holds 800 people. That way you can also get your journey planned ahead of time and be sure not to miss this truly memorable conference. If you want cocktails, however, I'm sorry, you'll have to pay for those at the regular price. Oh my goodness! Speaking of paying, I see I forgot to tell you a couple of things. The first is about lunch. The charge for the lunch will be $15 for all you delegates. If you have guests with you, the cost is $25 for the general public and $6.50 for children under the age of 10. That's $15 each, not total for everyone. Another item is about the lunch menu. I very much urge you to try the fish. I mean, look at the restaurant's name, the Sea View. As the name suggests, it is a famous seafood restaurant. The chef is a Basque from Spain, and he really gets quite put out when people ignore his fish specialities for burgers or barbecue. If fish isn't your thing, though, try the steak. He makes an exquisite filet mignon topped with blue cheese and mushrooms. Finally, if you'd like to buy a ticket, you can have both lunch and unlimited beer for $35. I should have mentioned that earlier, but I am a bit forgetful. Maybe I should avoid the beer after the conference, eh? Well, I've said my bit. Are there any questions? Yes. ये सेक्शन कैसा रहा? ठीक था सर। क्या क्या फिल्म किया जरा जल्दी से मुझे बताएं बारी बारी। एक मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं उसको। अच्छा ऊपर से करना है शुरू या फिर नहीं नीचे से? नहीं फ्रॉम 11 to 20। 1 to 10 तो कर ही लिया होना है आप लोगों ने, 11 to 20 देख लो। ओके, आई मिस्ड 11 का कंप्यूटर के बाद उसने क्या बोला था? आई मिस दैट। 12 में मेलबर्न, 13 में टॉप फ्लोर, 14 में ग्राउंड फ्लोर, 15 में 310, 16 में ईस्ट साइड। ये आई मिस दैट। ओके, Palm Lounge. अच्छा ओके। 16 was Palm Lounge. yes 16 was Palm Lounge। जी आगे 17 to 20 क्या है आप लोगों के पास? मैं बोलूं या? Yeah, sure. I'm sorry to interrupt you. आप पहले कर लो, आप कर लो पहले। For 17, I marked 6. आपके पास क्या क्या है? C, 17C, 18B, 19B, and 20C again. ओके आपने क्या है? C, 17B। ओके ओके। ये आपकी चॉइसेस हैं, ये जो चार मैंने हाईलाइट की हैं। Yes. ओके अनुषा आपकी क्या चॉइसेस हैं यहाँ पर? सर 17B, 18B, 19B और 20C। ओके आपकी चॉइसेस हैं B, B, B and C। ओके ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर वाज C, B, B and A। okay, now what I want you to do is to go back, ठीक है, लिंक अपने पास ओपन करें उधर, go back and listen to this section again, okay, and find out कहाँ पे आप लोगों ने जो है मिस आउट किया ऑडियो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज से like was it the accent that threw you off? नो सर, उसमें जरा थोड़ा आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ जोनिंग आउट। हो जाता है, आई ट्राई माय बेस्ट। या एग्जाम में नहीं करना, ओके 8 लेना ना अगर, तो एग्जाम में नहीं जोन आउट करना। हाँ, पता चले कि हम कहीं और पहुंचे हों, उधर वो कहे कि वाला ब्लू कॉन्फ्रेंस एंड हो गई है। तो okay, but anyways tomorrow we'll do sections 3 and 4, ठीक है, जो थोड़े से इससे ज्यादा डिफिकल्ट होंगे सिंसियर, बिकॉज उन पे डिफिकल्ट क्या होंगे एक्चुअली, उन पे ध्यान ज्यादा देना पड़ना है, बिकॉज दे विल बी ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे मतलब इट्स नॉट अबाउट गैसिंग एनी मोर, कि मतलब गैसिंग क्या होगी, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपकी कोर्स डिटेल्स हैं बिटवीन अ प्रोफेसर एंड अ स्टूडेंट प्रोबेबली, कि माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का कोर्स है, हु इज इंटरेस्टेड इन व्हाट कोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा,
ठीक है, and then we have how to choose flooring materials. So it's a lecture on flooring materials. So that's going to be quite technical. ठीक है, तो इसलिए keep your ears sharp. हम लोगों को जो है वो Okay. इसमें डिटेल्स के ऊपर जो है ना, and make small notes. I hope you were doing, both of you were doing that. Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। चलें जी, प्रैक्टिस ऑन योर ओन अ लिटिल। ठीक है, थोड़े से निकालें टेस्ट। आपके Okay. पास जो है ना वॉल्यूम 1 में 6 टेस्ट हैं, कोशिश करें 3-4 टेस्ट निकालें। ठीक है, और उनको रिवाइज करें। है ना, आपने तो रिवाइज ही करने हैं, आई सपोज आपने पहले किए हुए हैं। आप नए टेस्ट निकाल लें यूट्यूब से। मगर अनुषा, आपने जी। पहली दफ़ा ये वाला करना होगा, तो आप जो है ठीक है 2-3 टेस्ट ट्राई करो पहले, टू सेक्शंस को। ठीक है, ताकि यू गेट अ हैंग ठीक है। ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा सा आपको आइडिया, थोड़ा सा हाथ चले, थोड़ा सा फोकस बन जाएगा। थोड़ा सा जोन इन होने की कोशिश जोन इन करती हूँ होने की कोई, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस, वो एक दफ़ा हो जाएगा फिर इट विल बी मैं। फाइन। यस। ठीक है, सो ओके सर। विल मीट ओके। अप टुमारो। ठीक है, तो कल फिर अगले 2 सेक्शन करेंगे। ओके सर। चलिए, बड़ा ख्याल रखिएगा। Sir, थैंक यू वेरी मच लेडीज। sorry, सॉरी sir. ओके। जी। In question two, the हम्म option like he spoke the clock house, but he हम्म didn't spell the clock. So can we write according to our like नो I नो, wrote CLACK. he spelled Clark. She spelled Clark, CLARK. She spelled. Oh, I missed it. I think Yes, you I missed it. wrote CLACK. No, 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 no. Okay, She spelled Clark House. Okay. okay, okay. हाँ, चले Right. चले। Take Thank you. care. Bye bye. Okay. Allah Hafiz.